in-house training programs. Today, my topic is embracing multilingualism in classrooms. गजानन भूतम गणादि सेवितम कपित जागुफल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकार करो नमामि विंदेश्वर पात्मकरम। श्री गणेशाय नमः। भाषा शिक्षा में बहुभाषावाद का महत्व। भाषा सभी मनुष्यों और समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है, ये हम सभी जानते हैं। प्रत्येक बच्चा अपनी मातृभाषा को स्वाभाविक रूप से सीखता है। हम लोग सभी जानते हैं कि बच्चे जन्म लेते हैं, घर के परिवेश में अपने माँ बाप के या समाज से बहुत जल्द ही अपनी जो मातृभाषा होती है या जो घरेलू भाषा होती है या समाज की जो भाषा होती है उसको वह आसानी से सीख जाता है। इससे भाषाओं को सीखने के लिए मनुष्यों की प्राकृतिक प्रवृत्ति और विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं। इन मेनी स्कूल्स, हम अगर स्कूल्स की बात करते हैं, मेनी स्कूल्स इंग्लिश इज द डोमिनेंट लैंग्वेज that lessons are taught in. When there are peoples in schools who do not speak English as their first language, they can sometimes deal with barriers throughout their education. For example, perhaps not being able to distinguish what is being taught. This can have a big impact on how much the peoples will gain out of lessons. Therefore, there are many ways for schools to promote language learning. कई स्कूलों में अंग्रेजी प्रमुख भाषा है, जिसमें पाठ में पढ़ाया भी जाता है। और जब स्कूलों में ऐसे छात्र होते हैं तो अपनी पहली भाषा के रूप में अंग्रेजी नहीं बोलते, तो उन्हें कभी कभी अपनी शिक्षा के दौरान बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर मैं देखूं तो इस बात का प्रभाव विद्यार्थियों को पाठों में कितना लाभ देगा, यह तो शायद हमारे शिक्षक ही बता सकते हैं। या स्कूलों के पास भाषा सीखने को बढ़ावा देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। Firstly, from what I read, it is important that with regards to the home language and English, schools have both an attitudes rather than either or attitude when it comes to teaching in English and also in people's home language as well. This is important because it allows for fairness in class and for all peoples to gain as much out of lessons as possible. In addition, it allows peoples to embrace other cultures through learning from each other. Language and creative and inclusive learning community. सबसे पहले मैंने जो पढ़ा उससे यह महत्वपूर्ण है कि जब अंग्रेजी और विद्यार्थियों की जो घरेलू भाषा होती है उसके पढ़ाने की बात आती है, तो स्कूलों में घरेलू भाषा और अंग्रेजी के संबंध में
रवैया हम लोग अपनाते हैं शिक्षक, यह महत्वपूर्ण होता है कि कक्षा में निष्पक्षता सुनिश्चित करना आवश्यक है और सभी विद्यार्थियों को पाठ से यथासंभव अधिक लाभ प्राप्त हो सके, उसकी जानकारी हमारे शिक्षकों के अंदर होनी चाहिए। भारत एक बहुभाषाई और बहुसांस्कृतिक देश है, यह हम सभी जानते हैं, और यही विशेषता उसे दुनिया में एक विशिष्ट देश बनाता है। भारत जैसे बहुभाषी देश में किसी एक भाषा के सहारे काम चल ही नहीं सकता। हमें बहुत प्रकार की भाषाओं को जानने की आवश्यकता है। इस देश में हर प्रांत की अपनी एक अलग भाषा है और यहां अनेकों लोग ऐसे हैं जो अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा को भी जानते हैं और उसका ज्ञान रखते हैं। अनेकों लोग ऐसे भी हैं जो 2 से अधिक भाषाओं की जानकारी रखते हैं। आप अगर हम अपने बिहार की ही बात करते हैं तो बिहार में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2 से अधिक भाषाओं की जानकारी बहुत आसानी से रखते हैं और बोल सकते हैं। बहुभाषावाद व्यक्ति या एक समुदाय के सदस्यों को 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता है। हम अपनी कक्षा में भी 2 से अधिक भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं। बच्चे को जिस भाषा में सीखने में आसानी हो उस भाषा का हम बखूबी प्रयोग कर सकते हैं और बच्चों को उन भाषाओं में बताकर उनकी क्षमता को विकसित कर सकते हैं। अर्थात हमारे देश में बहुभाषी देश है जिसका असर शिक्षा क्षेत्र में भी पड़ता है। इसका असर हमारे शिक्षा क्षेत्र में बहुत अधिक पड़ता है। भारत शायद मान सकते हैं हम लोग कि एक ऐसा अनूठा देश है जहां भाषाई विविधता राज्य विभाजन का एक स्तंभ रही है और इसी के आधार पर राज्य का विभाजन भी किया गया है। बहुभाषिकता यहाँ की संस्कृति का भी अंग है। बहुभाषिकता पर हुए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि समाज में संप्रेषण को बाधित करने के बजाय सहायता प्रदान करती है। देश की प्रमुख जो साहित्यिक भाषाएं हैं, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, तेलुगु और अगर हम कहें तो 1500 से अधिक अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। और इन सभी भाषाओं के इस व्यापक उपयोग के साथ एक सवाल यह भी उठता है कि क्या ऐसा देश जो अभी भी इसका व्यापक उपयोग एक साथ या एक सवाल पर यह उठता है, करता है या नहीं करता है। और व्यापक भाषा की जो ये व्यापकता है अपने देश में, तो इस देश ने एकजुटता और एकीकरण को बनाए रखा है इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद भी। हालांकि बहुभाषी शिक्षा का प्रस्ताव शिक्षा भारत में अस्तित्व नहीं थी,
अभी भी नहीं है, लेकिन उपनिवेशीकरण होने से पहले शिक्षा किसी भी एक भाषा में होती थी। लेकिन ज्यादातर संस्कृत जैसी भाषाओं में उच्च शिक्षा जो ज्यादातर संस्कृत जैसी भाषाओं में होती है, और यह धार्मिक ग्रंथों की भाषा भी है। संस्कृत हमारे धार्मिक ग्रंथों की भाषा है। इसके बाद उपनिवेशीकरण के साथ इस देश में शिक्षा के माध्यम में एक अलग बदलाव आया और भाषा का विस्तार होता चला गया। स्वतंत्रता के बाद भी अंग्रेजी का महत्व बरकरार रहा, लेकिन भारतीय भाषाओं की शिक्षा प्रणाली में पुनर्जीवित करने के बाद एक प्रयास किया गया, इसको शिक्षा के मातृभाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास रहा। तो बहुभाषावाद को समाज के भीतर कई भाषाओं का अस्तित्व माना जाता है। अगर हम स्कूलों में रीजनल क्षेत्रीय भाषाओं का अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो बच्चे बहुत आसानी से उन चीजों को सीखते हैं। कक्षा के भीतर पारस्परिक स्थान बनाना भी महत्वपूर्ण है, जो अंग्रेजी और प्रत्येक बच्चों की घरेलू भाषा दोनों में साक्षरता के विकास का समर्थन करता है। इससे सभी विद्यार्थियों को साझा स्थान पर एक दूसरे के मतभेदों को अपनाने में सहजता महसूस होती है। यह अच्छा है, क्योंकि आईवी स्कूलों में यह विद्यार्थियों को प्रत्येक अलग अलग संस्कृति की सराहना, जिज्ञासा और सहानुभूति की कौशल विकसित करने के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिमाग वाले लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि स्कूलों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे तरीके हम अपना सकते हैं। खास करके साक्षरता के साथ साथ अंग्रेजी के विकास को सुदृढ़ करने के लिए नई प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। डाइवर्सिटी is culture and is the society is reflected in the classroom, and the students have different languages, interests and abilities. Students came from the different social and economic backgrounds. We can't ignore these differences. Indeed, we should celebrate them, as they can become a vehicle for learning more about each other and the world beyond our own experience. All students have the right to an education and the opportunity to learn regardless of their status, ability and background, and this is recognized in Indian law and the international rights of the child. In this, the first speech to the nation in 2014, Prime Minister Modi emphasized the importance of valuing all citizens in India, regardless of their caste, gender, or income. School and teachers have a very important role in this respect. संस्कृति और समाज में विविधता हमारी कक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। विद्यार्थियों की भाषाएं, उनकी रुचियां और क्षमताएं अलग अलग होती है। छात्र विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इन मतभेदों को समझना होगा और इसको हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। वास्तव में
हमें उनका जश्न मनाना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि वे एक दूसरे के बारे में और हमारे अपने अनुभवों से परे कि दुनिया के बारे में और अधिक जानने का माध्यम बन सकते हैं। सभी छात्रों को उनकी स्थिति, उनकी क्षमता और पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना शिक्षा और सीखने का अवसर अधिकार है, उनका अधिकार है, और यह भारतीय कानून और बच्चे के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों में मान्यता प्राप्त है। हमारे राष्ट्र के नाम के अपने पहले भाषण में जब वो प्रधानमंत्री बने थे हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो भारत में सभी नागरिकों को अपनी जाति, लिंग या आय की परवाह नहीं की। महत्व देने के सबसे पहले उन्होंने उनके भाषाओं पर महत्व दिया। इन संबंधों में स्कूलों और शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। All of we have the views about others that we may have recognized or addressed. As a teacher, you carry the power to influence every student's experience of education in a positive or negative way, whether knowingly or not. Your underlying and views will affect how equally your child, your students learn. You can take steps to guard against unequal treatment of your students. There are three key principles to ensure your involving all in learnings. First point is that noticing. Effective teachers are observant, perceptive and sensitive. Effective teachers are observant, perceptive and sensitive. They notice changes in their students always. If you are observant, you will notice when a student does something well, when they need help and how they relate to others. You may also perceive changes in your students which might reflect changes in their homes, circumstances or other issues. Involving all requires that you notice your students on a daily basis. Paying particular attention to students who may feel marginalized or unable to participate. And next key principle to ensure involving all in learnings according to focus on self-esteem. Good citizens are one who are comfortable with who they are. They have self-esteem, know their own strengths and weaknesses, and have the ability to form positive relationship with other people. Regardless of background, they respect themselves and they respect others. As a teacher, you can have a significant impact
on a young person's self-esteem. Be aware of that power and use it to build the self-esteem of every student. And next, key principle to ensure your involving all in learnings are flexibility. If something is not working in your classroom, for specific students, groups or individuals, be prepared to change your plans or stop an activity. Being flexibility, enable you make adjustment so that you involve all students more effectively in the classrooms. Approaches, you can use all the time, all type of approaches. You can use all the times for the development of the students. Modeling good behavior. Be an example to your students by treating them all well. Regardless of ethnic group, religion or gender, treat all the students with respect and make it clear through your teaching. According to the method of the teaching, you first of all, the value of the all students equally on the method of teaching. Talk to them all respectfully. Take account of their opinion when appropriate and encourage them. All the students take responsibility for the classrooms by taking on tasks that will benefit everyone. High expectations. Next approach you can use all the times. Ability is not fixed. All students can learn and progress if supported appropriately. If a student is finding difficulties to understand the work you are doing in class, then do not assume that they cannot ever understand. Your role as a teacher is to work out how best to help each student learn. It is the responsibility of the teacher is to work out how best they help each student learn. If you have high expectations of everyone, in your class, your students are more likely to assume that they will learn if they preserve. High expectations should also apply to behaviors. Make sure the expectations are clear and that students treat each other with respect. Next approaches, build variety into your teachings. Mix up teachings. Also
also known as mix-up teachings. Build variety into your teachings methods, and the students learn in different ways. Some students like to write, others prefer to draw mind maps or pictures to represent their ideas. Some students are good listeners. Some learn best when they get the opportunity to talk about their ideas. You cannot suit all the students all the times, but you can build variety into your teachings and offer students a choice about some of the learning activities that they undertake. What type of steps are taken in the classroom depend on the methodology of the teaching of teachers. Relate the learning to everyday life. For some students, what you are talking them to learn appear to be relevant in their everyday lives. You can address this by making sure that whenever possible, and you relate the learning to a context that is relevant to them, and you draw on examples from their own experience. भारत में बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में देखने की बजाय एक समस्या की तरह देखा जाता है। इसके लिए हम स्कूलों का उदाहरण ले सकते हैं, जहां क्लासरूम में एक बच्चे को अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। एक घटना है राजस्थान के सिरोही जिले में। बच्चे गरसिया भाषा में गुब्बारे को पोपटा कहते हैं। तो एक स्कूल में बच्चे को गुब्बारे बांटे जा रहे हैं। इसके पहले बच्चों से पूछा गया कि मेरे हाथ में क्या है, तो क्लास में सारे बच्चे एक साथ बोले ये पोपटा है। तो सिरोही जिले में बोली जाने वाली एक भाषा है जिसमें गुब्बारे को पोपटा कहा जाता है। अब इसके बाद अध्यापक की प्रतिक्रिया थी कि ये पोपटा नहीं है, ये गुब्बारा है। तो आमतौर पर उनका यह कहना सीधे तौर पर बच्चों को यह समझाने की कोशिश थी कि क्लास में तुम्हारे घर या गांव परिवार में बोली जानी भाषा के लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर क्लास में कौन सी भाषा के लिए जगह है? क्या बच्चे का पोपटा बोलना गलत था? इस पर अध्यापक को विचार करना है कि बच्चे जिन भाषाओं में आसानी से समझ सके, हम उन भाषाओं का उपयोग करके बच्चों को विकसित करें। यह शिक्षक के अगले जवाब के सामने आता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 9वीं और 10वीं कक्षाओं के लिए हिंदी के पर्चे में छत्तीसगढ़ी में जवाब देने की बात हुई, तो इसका सबसे ज्यादा विरोध स्थानीय शिक्षकों ने ही किया। उनका कहना था कि हम हिंदी विषय में छत्तीसगढ़ी के इस्तेमाल को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं।
इस तरह का नजरिया बहुभाषिकता के विरोध वाला नजरिया है, जो यह मानकर चलता है कि विचारों का आदान प्रदान और अभिव्यक्ति केवल मानक भाषा में ही हो सकता है। स्कूलों में स्थानीय भाषाओं को महत्व देने की बात उनके गले नहीं उतरती। भाषा शास्त्र के प्रोफेसर रमाकांत अग्निहोत्री ने एक साक्षात्कार में मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के मसले पर बताया है, और उनका कहना भी है कि बच्चों की भाषा को स्कूलों में खामोश कर दिया जाता है, तो यह स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि बच्चे की मातृभाषा उसकी पहचान होती है, और यह सामाजिक ताने बाने के बीच संवाद को बरकरार रखने में मदद करता है। साक्षात्कार में वे बच्चों को उसकी भाषिक परिवेश से काटने वाली प्रक्रिया की तरफ संकेत करते हैं। हमें इससे बचना होगा। हमें खुद बहुभाषिक बनना होगा। हम शिक्षकों को मल्टीलिंगुअल करना होगा। Relate the learning to everyday's life. For the some students, what you are asking them to learn appears to be relevant of their everyday lives. Use of language, different type of language in the classrooms. Think carefully about the language you use. Use positive language and praise, and do not ridicule the students. Always comment on their behavior and not show them, "You are annoying me today." It's very personal and can be better expressed as, "I am finding your behavior annoying today. Is there any reason you are finding it difficult to concentrate, which is much more helpful?" Challenge our stereotypes. Find and use resources. What shows girls in non-stereotypical roles, or invite female role models to visit the school, such as scientists. Try to be aware of your own gender stereotyping. You may know that girls play sports and that boys are caring, but often we express this differently, merely because that is the way we are used to talking in society. मैं दो तीन बार मुझे VITM कोलकाता जाने का मौका मिला, और वहां पर जो विज्ञान मेला आयोजित होती है, पूर्वी भारत विज्ञान मेला, उसमें बहुत सारे राज्यों के बच्चे प्रतियोगिता में सम्मिलित होते हैं। सिक्किम, मिजोरम,
छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बिहार, असम आदि आदि। तो बच्चे अपनी अपनी भाषाओं में बात करते हैं, अन्य भाषाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे या मैं खुद जब उन बच्चों से बात करते हैं तो सिर्फ वो बच्चे सिर्फ अंग्रेजी ही समझते हैं, हमारी भाषा और अन्य भाषाओं का वो प्रयोग नहीं कर सकते, ना हम ना वो बच्चे। और हमारे बिहार में ही सभी बच्चे ऐसे नहीं हैं जो कि सभी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है उनको सही रूप से। तो जब वो बताते थे बच्चों को और उनसे पूछते थे तो वह सही रूप से उस मॉडल्स के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते थे कि उन्होंने किस तरह का मॉडल बनाया है, उसकी जानकारी सही रूप से प्राप्त नहीं हो पाती थी। इसलिए हमें मल्टीलिंगुअल बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा देश बहुभाषाई देश है, हमारे देश में विविधता है और इसीलिए भारत एक अनूठा देश भी है। क्रिएट ए सेफ वेलकमिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। All the students need to feel safe and welcome at school. You are in a position to make your students feel welcome by encouraging respectful and friendly behaviors for anyone, everyone. Think about how the school and classroom might appear and feel like to different students. Think about where they should be asked to sit and make sure that any students with visual or hearing impairment or physical disabilities sit where they can access the lessons and always check that those who are shy or easily distracted or where you can easily include them. Specific teaching approaches. There are several specific approach that will help you to involve all the students in the class. These are described in more details in other key resources, but a brief introduction to given here. It is not possible to explain vast methods. First of all, questioning. If you invite a student to put their hands up, the same people tend to answer. There are the other ways to involve more students in thinking about the answers. In responding to questions, you can direct questions to specific people. Tell the class you will decide who answers. Then ask people to at the back and sides of the room. Always ask the questions. Students sit at the back and side of the room. Rather than those sitting at the front.
Use pair or group work to build confidence so that you can involve everyone in whole class discussions. Like that. Always ask questions. Those type of students. Assessment. We develop a range of techniques, different techniques for formative assessment that will help you to know each student's well or not. Different strategic range of techniques are developed for each student. You need to be creative to uncover hidden talents and shortfalls. Formative assessment will give you accurate information rather than assumptions that can easily be drawn from generalized views about the certain students and their abilities. We will then be in a good position to respond to their individual needs. Group work and their peer work. It is very important methods. Think carefully about how to divide your class into groups or how to make up pairs, taking account of the goal to include all the encourage students to value each other. Ensure that all the students have the opportunity to learn from each other and build their confidence in what they know. Build their confidence in what they know. Some students will have the confidence to express our views, ideas, and ask questions in small groups, but not in front of the whole class. Differentiations. It is the most important approach used in the classroom. Setting different tasks for different groups. According to groups, different tasks will help the student to start from where they are and move forward. Setting open-ended tasks will give all the students the opportunity to succeed. Offering students as a choice of task. स्टूडेंट से पूछना, उसके अकॉर्डिंग टास्क देना, उनके चॉइस के मुताबिक. Help them to feel ownership of their work and to take responsibility for their own learnings. Taking account of individual learning needs in difficult, especially in a large class, but by using a variety of tasks and activities, it can be done in the classroom. Greetings. It is the important word used in the classroom, always used in the classroom. Ask your multilingual students to teach their classmates
क्लास में हमारे वैसे बच्चे होते हैं जो एक से अधिक भाषाओं को जानते हैं। उन बच्चों को क्लास में सम्मिलित करना, उनसे भाषाओं का ज्ञान लेना, डेवलप ए रूटीन whereby at the start of the day and you greet your students in the school language and then in each of their home language, with the whole class responding to the series of greetings accordingly. Do the same to say goodbye at the end of the school day. Level the features of your classroom in both Hindi and your students' home language. Use different colored pens or cards to help distinguish the different languages. If you are multilingual students are literate in their home language, they can help to write the translated labels themselves. Translated labels themselves अपने बहुभाषी विद्यार्थियों को, अपने सहपाठियों को उनकी घरेलू भाषा में अभिनंदन सिखाने के लिए कहें। उनको एक दिनचर्या विकसित करें, उनकी एक दिनचर्या को विकसित करें और उसके तहत हम अपने दिन की शुरुआत करें। हमारे स्कूलों में भाषा में उनकी प्रत्येक घरेलू भाषा का अभिवादन करें, उसको स्वीकार करें और पूरी कक्षा को एक ग्रुप बनाकर बच्चों को उसके लिए जागृत करना। अपनी कक्षा में विशेषताओं में हिंदी और अपने छात्रों की जो घरेलू भाषा है उनसे बच्चों का मार्गदर्शन कराना, विभिन्न भाषाओं को अलग अलग तरह से पहचानने की, अलग अलग रंगों के माध्यम से पहचानने की कला को जागृत करना। A multilingual word wall. Create an involving word wall. Always create word wall in your classroom by posting up useful words and expressions in your students. घर में बहुत सारी ऐसी सामग्री होती है जिनका यूज हम लोग करते हैं और बच्चे अपनी भाषा में उसका उपयोग करते हैं। तो अलग अलग हमारी जो प्रांतीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा है उसमें उन चीजों को क्या कहा जाता है उसकी खोज करने कहना और फिर क्लास में उन चीजों की जानकारी देना। Different useful words and expressions are used in the classrooms like that: hello, goodbye, sorry, thank you, and seek out the opportunities to invite your students to contribute new words. Use different colored pens or cards to distinguish the language as with the labels above. Multilingual reading materials. Start the collection of books, magazines, leaflets,
and other reading materials in the language that your students speak, and add these items to your reading quota. बहुभाषी पाठन सामग्री का उपयोग करना। आपके छात्र जिन भाषाओं में बात करते हैं उनमें पुस्तकों, पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं और अन्य पठन पाठन की सामग्रियों के द्वारा सबसे पहले उनका संग्रह कराना और फिर उसका ज्ञान प्राप्त करना। मल्टीलिंगुअल डिक्शनरीज use very important tools. Multilingual dictionaries involve your students in creating bilingual or multilingual dictionaries. Depending on your students' needs, and these dictionaries could focus on simple words and pictures, vocabulary relating to everyday topics such as schools, home, the park, body parts, animals, or subject specific terms like that pertaining to maths, science, environmental science, or many other different subjects. If your students are studying English, they could compile a multilingual dictionary that lists words in English, Hindi and their home language. Leave the dictionaries is an accessible place for all your students to look at. Keep a list of the new words and set aside a time for your students to add these and others to the dictionary on a regular basis. Translanguaging is a relatively new term. For an age-old practice, that of switching between the language इसको समझने के लिए हम एक वीडियो देख रहे हैं। Countries of immigration are becoming more and more multicultural and multilingual. Though all languages have the same function, there is a common idea that some languages, such as countries' official languages and international languages like English, are better and more useful than others. This has an impact on the emotions that children with migrant parents might feel towards the official language and the languages spoken at home, often leading them to be ashamed of their home language because they feel that it's not as important as the majority language. If children refuse to learn and speak their home language, parents may feel discouraged and decide not to speak to their children in their native language. Sometimes parents think that using their native language at home might make it more difficult for the children to learn the official language spoken at school. The attitude that school and teachers have towards home languages is crucial. Sometimes teachers are worried that immigrant children might not learn the official language quickly enough. They might also be worried that other children feel left out if immigrant children talk to each other in their home language. For these reasons, some teachers may ask students to speak only the majority language at school. Although it is important to promote learning of the official language, it should be strongly emphasized that all languages are important. If the school doesn't actively promote all languages, students can believe that the language spoken at school is more important than their home language.
teachers can promote multilingualism by using approaches such as translanguaging and language awareness. Translanguaging is a teaching approach that encourages students to use different languages in class. It works at its best when both the teacher and the students know the same languages. In this case, pupils can be asked to discuss a topic in one language and then write about it in another language. Even teachers who can only speak one language can use translanguaging. In this case, they become co-learners and encourage students to use their home language in class, even if they can't speak the language themselves. This way, pupils are allowed to express their ideas not only by using the majority language, but also by using other language tools they have available. Language awareness is another teaching approach that is aimed at promoting multilingualism at school. It involves all the languages known by pupils, their native home languages, foreign languages that are taught at school, other languages that are spoken in the area, such as dialects, body language, and other forms of communication, such as sign language or braille. This doesn't mean that teachers are expected to know and teach all these languages. Language awareness emphasizes the fact that all languages have the same value. Being able to communicate in different languages nowadays is a great advantage. Even when the children's skills in one of the languages are limited, the ability to understand, speak, read, or write something in another language is still useful. The starting point for language awareness activities should be pupils' language repertoires. That is the language spoken by each student, which becomes a focus for reflection and learning. To promote language awareness, teachers can talk openly about the different languages spoken by students, encourage children to think about different languages and compare them to discover differences and similarities, simulate positive attitudes towards all languages, and ask students to think about the ways in which we use and learn languages. Activities that teachers can carry out in class could involve listening to recordings in different languages, asking students to talk about their skills in different languages, and having pupils interview each other about their language repertoires. Teachers should make sure that all the languages spoken by students are included in the curriculum without having to teach them in a traditional way. For example, signs and notices in different languages can be displayed in the school environment, and resources such as books can be made available in different languages. Teaching approaches such as translanguaging and language awareness make children who speak different languages at home feel welcome at school and comfortable when talking about their skills in these languages. By taking part in activities that promote multilingualism, students who speak only one language not only learn a lot about different languages and cultures, but also gain awareness about living in a multilingual society and an interest in foreign languages. Being bilingual gives children better job prospects. Proficiency is more than one language immediately improves your child's chances of finding work. After leaving schools, this is true. Even if you are only speak one extra language, they are also likely to place immediately into an occupation and role of higher social status. Then their monolingual counterparts and immediately draw higher incomes. This is due not only to the fact that speakers of more than one language have more highly developed connective skills and therefore perform better at general tasks.
but also because they have access to a wider job market. Thanks, a lot of thanks to you.